Now, dear students, let me see the effects on solvent in UV visible spectrum. There are some types of bands which are formed due to the solvent effect or due to what the conjugation present in the molecule. Now let me see the one by one what are the types of bands or the peaks you can say that is observed, and what are the moieties or substituent responsible for that. The first one is K band. K band, you can see here it is K band which is named as conjugarity. K band, what this K stands for? Conjugarity. Conjugarity means conjugation. This K band is formed due to the pi to pi star transition in conjugated molecule. Whenever there in molecule, जो भी molecule में conjugation होगा वो molecule K band form करेगा, K band form करेगा, और that is due to the pi to pi star transition. Conjugation means क्या होता है कि molecule में alternate कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसे हम conjugation कहते हैं. अब जिस कोई molecule में conjugation होगा वो मॉलिक्यूल K बैंड बताएगा, isn't it, UV visible spectra में. और इंटेंसिटी ऑफ K बैंड इज मोर देन द अदर बैंड, दैट इज इंटेंसिटी एप्सिलॉन मैक्स इज 10 to the power 4, isn't it, 10 to the power 4. So you to keep in mind that कि whenever there is conjugation in the molecule shows K band. K band is due to pi to pi star transition, isn't it? For example, diene. So here you can have just like carbon carbon double bond, it is alternate to carbon carbon double bond, isn't it? Just like 1,3 butadiene, right? Diene. So alternate carbon carbon double bond is there, and here it is in molecule there is a conjugation, so therefore it shows K band. Diene. Polyene, isn't it? Polyene means the carbon carbon alternate carbon carbon double bond, isn't it? Two or more than two alternate carbon carbon double bond. Then aromatic compounds shows K band. So you have to keep in mind that diene, polyenes, aromatic compound shows K band, or in another word, whenever in a molecule there is a conjugation it shows K band. अब दूसरा है R band. R band means it is formed due to N to pi star transition, and transition mostly occurred in carbonyl compound, and the intensity of R band is less than 10 to the power 4 epsilon max, that is, isn't it? So because intensity is very less, it is forbidden bands. So N to pi star, you have to keep in mind that N to pi star band, though it is observed as higher wavelength, but intensity is very less, and therefore it is forbidden band. And this R band, अब जिस कोई मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो N to pi star शो करेगा, ट्रांजिशन शो करेगा, और N to pi star ट्रांजिशन शो करेगा, दैट मीन्स इट शोज R band. बिकॉज whenever a molecule containing C double bond O group, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप, तो मॉलिक्यूल में N to pi star ट्रांजिशन होगा, दैट मीन्स मॉलिक्यूल R band दिखाएगा, isn't it? For example, here it is aldehyde and ketone compound shows R band, like acetone, N to pi star transition 270 nanometer. acetaldehyde कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी N to pi star transition 293 nanometer. अब यहाँ पे एसिडोफिनॉन C double bond O group, again it is कार्बोनाइल ग्रुप, N to pi star transition is 319 nanometer. So you have to keep in mind that कार्बोनाइल ग्रुप अगर है तो N to pi star ट्रांजिशन शो करेगा, R band मिलेगा. सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स कॉन्जुगेशन है, तो K बैंड रहेगा. नाउ B बैंड, थर्ड वन, दिस बैंड इज फॉर्म ड्यू टू pi स्टार ट्रांजिशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग क्रोमोफोरिक ग्रुप एंड हेटेरो एटम. B band is observed at longer wavelength and less intense than K band. For example, you can see here it is benzene. जब कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा तो वो B बैंड दिखाएगा, isn't it? टोल्यून, स्टायरीन,
Why? Because there is chromophoric group on toluene, means CH3 group was introduced on benzene ring, that is chromophoric group. So pi to pi star transition, absorption wavelength increases to 62 nanometer. यहाँ पे pi to pi star 255. अभी स्टायरिन इट इज एरोमेटिक रिंग के बजाय एक C डबल बॉन्ड C कॉन्जुगेशन जो है वो रिंग के कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है रिंग के लिए, तो 282 नैनोमीटर लैम्बडा मैक्स रहेगा. दैट मीन्स स्टायरिन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेस, दैट इज 5. टोल्यून नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 4. in benzene it is 3. So that's why as number of conjugation increases, lambda max, that means absorption wavelength also increases. You can see here for benzene 255, toluene 262, for styrene it is 282. So बेंजीन अगर मॉलिक्यूल है या फिर एरोमेटिक मॉलिक्यूल है तो वो हमेशा बी बैंड दिखाएगा. यू डू कीप इन माइंड दैट बी बैंड भी दिखाएगा और के बैंड भी दिखाएगा, isn't it? Now let you see E band. E band is formed due to the benzenoid system. For example, E band compound must have 3 double bond in conjugation. अब जैसे पॉलीन कंपाउंड जो है, पॉली एरोमेटिक कंपाउंड जो है, isn't it? Just like बेंजीन हमने देखा है E1 बैंड दिखाएगा और E2 बैंड दिखाएगा, which is at 184 नैनोमीटर 204 नैनोमीटर पे, isn't it? लैम्बडा मैक्स जो भी है. अब नैप्थेलिन, दैट मीन्स वन बेंजीन रिंग फ्यूज टू अनदर वन, E1 band 221 nanometer, E2 band 286 nanometer. Anthracene, the third benzene ring again fused to the naphthalene, that is 256 nanometer E1 band and E2 band to 375 nanometer. So aromatic compound जो है just like benzene, naphthalene, anthracene shows E band. जिस कभी कंपाउंड में, जो भी कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन रहेगा और वो बेंजेनॉइड सिस्टम अगर है तो वो कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल ई बैंड शो करेगा, isn't it? ई बैंड शो करेगा. और देयर आर टाइप्स ऑफ ई बैंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू E1 एंड E2 डिपेंडिंग अपॉन द एब्सॉर्प्शन वेवलेंथ. E1 की कम रहेगी, E2 की ज़्यादा रहेगी. सो these are 4 types of bands depending upon the unsaturation or double bond present in the molecule or solvent, or what you can say the conjugation present in the molecule, isn't it?